A warm welcome to all of you. आज थर्सडे है और हमारा नया लाइव सेशन बहुत अच्छा लगता है आपके साथ इंटरेक्ट करके। लास्ट वीक की अगर मैं बात करूं तो लास्ट वीक हमारा सेशन था सीक्रेट टू मास्टर द आर्ट ऑफ नेटवर्किंग विद इन्फ्लुएंसर्स एंड वीआईपीज। हाय मैम, जस्ट अ सेकेंड। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज़ एक थम्स अप दे दीजिएगा। और मिस्टर राहुल गुप्ता जी के साथ हमने लास्ट सेशन किया था, बीच में लास्ट थर्सडे दिवाली थी, दीपावली आप लोगों ने बहुत इन्जॉय की होगी। तो अब हम आज अगले सेशन के साथ आए हैं और कोशिश यही है कि हर वीक थर्सडे हम लोग लाइव सेशन करेंगे। और आप में से कोई अगर थम्स अप आ गया दैट मीन्स आवाज़ क्लियर है। थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू। तो आज का जो सेशन है दैट इज़ स्टोरी टेलिंग फॉर कम्युनिटी ग्रोथ, शेयरिंग स्टोरीज दैट कनेक्ट। कहानी हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कहानी को हम लोग इन्जॉय भी करते हैं और अच्छा लगता है जब कोई कहानी सुनाता है। लेकिन क्या उस कहानी से किसी तरह हमारी ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प हो सकती है या हम एक कम्युनिटी बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, वही सारी चीज़ें हम आज जो है वो बात करेंगे। तो मैं फटाफट से आज जो हमारे गेस्ट हैं उनके बारे में बता दूं। आज हमारे गेस्ट हैं मिस आंचल बवेजा जी, और शी इज़ अ थिंकर, राइटर एंड अ स्टोरी टेलर। और अगर मैं बात करूं, जितनी मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई है तो बहुत ही स्वीट एंड हम्बल हैं, इंटरेक्टिव हैं बहुत ज़्यादा। लिंक्डइन में भी बहुत अच्छे से अपना जो कंटेंट है वो प्रेजेंट करते हैं और सोशल मीडिया में भी कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप नए क्रिएटिव एंड इनोवेटिव आइडियाज़ वाले लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो तो काफ़ी मज़ा आता है। तो एंड आई एम क्वाइट श्योर कि आज वो हम सबको इंस्पायर करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे विद हर स्ट्रैटेजीज, विद हर कन्वर्सेशन। क्योंकि स्टोरी टेलिंग अगर हमने सीख लिया, हेलो सर कैसे हैं आप, स्टोरी टेलिंग अगर हमने सीख लिया तो कहीं ना कहीं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रांडिंग में और कम्युनिटी बिल्डिंग में। स्टोरीज़ क्या हैं, किस तरह हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लेके बैठे हुए हैं। तो जैसे ही मैम आते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। मैं फटाफट से तब तक पिछला जो हमारा सेशन हुआ है राहुल गुप्ता जी के साथ वो बता देता हूँ। उसमें नेटवर्किंग के बारे में हमने बात की थी और सर ने बहुत अच्छे से नेटवर्किंग बताई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्टीन्यूस नेटवर्किंग इवेंट्स जो होते हैं उनमें जाते रहते हैं, चीज़ों को कहीं ना कहीं बताते हैं वो। तो अच्छा लगता है जब कोई आपको हेलो सर कैसे हैं आप, तो धीरे धीरे और लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है। तो उनकी जर्नी के बारे में हमने बात की, क्या चीज़ ने उनको इंस्पायर किया नेटवर्किंग के लिए, वो बात की। कुछ एक और हमने इफ़ेक्टिव नेटवर्किंग की जो स्टेप्स होते हैं, स्ट्रैटेजीज़ होते हैं, उनके बारे में बात की। नेटवर्किंग में क्या चैलेंजेस हैं वो बात की। तो इस तरह की चीज़ें हमने डिस्कस की थी उनके साथ। तो आई थिंक हम थोड़ा सा पहले भी आज लाइव हुए हैं, तो जैसे ही मैम आते हैं वी कैन डिस्कस। स्टोरी टेलिंग पे ऑलरेडी हमने सेशन किए भी हैं। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं ज्वाइन कर लिया है उन्होंने जी। आंचल मैम, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो आपको एक बार मेरे को शायद रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, या मैं यहाँ से भेज सकता हूँ या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी। अच्छा है, लेकिन दोबारा करना पड़ेगा। आई कैसे हो मैम, वेलकम। Thank you. Thank you for inviting me. I'm good. How are you? आई एम फाइन मैम, एंड द प्लेजर इज ऑल माइन, क्योंकि आपका जैसे है मल्टीपल डोमेन्स में आप हैं। हमें तो बस तीन ही पता है, थिंकर, राइटर और स्टोरी टेलर। बट जैसे जैसे आपकी प्रोफाइल को थोड़ा जानना शुरू किया तो पता चला कि हाँ, और चीजें भी हैं जो आप कर रहे हो। और आज मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है वो इंस्पायर्ड और अपलिफ्टेड फील करे सेशन के बाद। तो शुरू मैम आपकी जर्नी, आपकी जुबानी उससे करते हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में आप सबको थोड़ा सा एक बार बताइए। Okay. Thank you so much for that lovely introduction. I'm Aanchal and I'm a writer, storyteller and strategist. ठीक है. When I started writing, I started with content writing.
Then I explored different things, which were social media writing. Then I also tried script writing. धीरे धीरे my writing expanded, and I started working with different influencers and coaches, helping them with their strategy, with their account management. And वहीं से I think I picked up storytelling and realized that I really enjoy storytelling and help those creators that I was working with to grow a community through storytelling and sharing their personal unique voice with the world. ओके एंड मैम, Yeah. सिंस यू हैव वर्क विद मल्टीपल पीपल, तो क्या आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी उसमें और क्या सबसे बड़ा चैलेंज लगा उसमें? Okay. So I think working with different people definitely expands your horizons as a writer. ठीक है. When you work with different people from different niches, you get to know about different trends of different industries. Okay, this thing might work in a certain industry, but this might not work in another industry. And there was a time when I was working with two creators from the same industry, same niche, and even though those were like two people from the same industry, उन दोनों का voice was so different that we had to explore different strategies and different techniques for both those accounts. So I think challenge nahi, but I think this is a fun part somewhere that you have to really understand the people that you're working with and their respective audiences. Because if uh, you know you're working with someone and you're writing for them, their audience can easily recognize कि क्या ये उसी क्रिएटर का वॉइस है या फिर इट्स साउंडिंग स्क्रिप्टेड. ठीक है. तो that's a fun thing, not a challenge, that you have to really adapt to their voice so that you, what you are writing really blends in with their voice so that their audience can also have a connection with their profile, and the creator also does not feel that this is not their natural flow of content. True, true. And normally we believe that it's a myth, you can say, that content writing is very monotonous, very boring. But I know it requires a lot of creativity and innovation. So how do you keep up yourself with creative ideas and innovation in content writing? So I think content, maybe there are like different niches, you would know, right? That there are, you can like have numerous niches. You can be working in something which is like finance or real estate, whereas there is also uh, parenting, take care, love and relationships. So it covers everything. So to be creative in those niches and to always come up with something which is trend setting, I think it's really necessary that you research well about the different industries and niches that you're going to work in, and then follow the industry leaders. I would say that if someone is a top creator in a particular niche, uh, study that creator, what worked for them, what did not work for them. uh, Try those strategies, try those tips that you have learned, and it's a lot of trial and error, honestly. Like what may work for one creator might not work for another creator. So y- I think a good practice is learning from people who have cracked it, ठीक है, and then applying whatever suits you, and omitting what is not working for you. Perfect. Perfect, ma'am. Now I'll come up with very simple question. स्टोरी है, एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है, लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट और एक लास्टिंग इफेक्ट हमारे माइंड में छोड़ देती है, वो बहुत मैटर करता है. नॉर्मली हमें लगता है कि स्टोरी है, इसमें क्या ही होगा, बट द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग इज वेरी, आई वुड से, जिसको कहते हैं ना, बहुत खतरनाक है. वो पॉजिटिव इम्पैक्ट भी छोड़ सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी छोड़ सकता है. क्या चीज ऐसी है जिससे हम एक स्टोरी को
पॉजिटिव वे में ट्रूली इंगेजिंग और मेमोरेबल बना सकते हैं। क्योंकि हम जब ब्रांडिंग की बात करते हैं और ब्रांड वैल्यूज की बात करते हैं, तो स्टोरी टेलिंग की थ्रू हम लोग उस चीज को कहीं ना कहीं एक इम्पैक्टफुल वो चीज कर सकते हैं कि इंगेजिंग हो और मेमोरेबल हो, कैसे हम किसी स्टोरी को रख सकते हैं। ओके, सो आई थिंक कुछ भी इफ आपको मेमोरेबल रहेगा, so it would have to strike a chord with you. It would have to stimulate some emotions in you, right? So when I started storytelling, there was a writer that I used to really follow, and the thing about that writer was whenever I would read their stories, it would leave me feeling something. It would leave me impacted. Either I was inspired or I was disappointed or hurt because of the incidents that happened to them. Like these incidents were not even happening to me, right? But उन्होंने वैसा लिखा है that these things would make me feel that emotion. So whenever we are trying to make a story engaging and memorable, we have to focus on these points, that this strikes a chord with the audience, ठीक है, and this makes the audience feel something. And for the story to be really engaging, we have to sometimes also, now this is the more technical part, pacing का ध्यान रखना होगा, and words, and उधर you have to be really careful that whatever words you are using and the flow that you are using in your story, it does not bore your reader. So engaging के लिए I think it's more in the editing. When you write the first draft, it might seem boring if it is like raw story. When it goes through a little bit of editing, आप उसको सही से पेस कर सकते हैं. You can measure the right number of words, ठीक है, what can be omitted, what is one thing that we often use in storytelling is show not tell. So what can be shown instead of telling it in like 3 4 lines, right? So editing me, you can make the story engaging, and it's important that it is authentic to you, so that it can strike a chord with your audience as well. ग्रेट मैम, ग्रेट। और जैसे इफ आई आस्क कि आपकी हॉबीज क्या हैं, क्योंकि साइड बाय साइड हम थोड़ा आपको भी जानना चाहते हैं, क्योंकि कंटेंट लिखना बहुत फोकस का काम है, बहुत ही आपको कंसंट्रेशन से लिखना पड़ता है, तो उसके बाद थोड़ा सा इंसान जो है ड्रेन आउट फील करता है। तो हाउ डू यू कीप अप योर एनर्जी? क्या हॉबीज हैं या क्या एक्टिविटीज आप प्रेफर करते हो? कैसे हैंग आउट करते हो या वापस अपनी एनर्जी को रीएक्टिवेट करते हो? uh, to be honest, I understand that content does require time, but it for me, it has become such ke whatever is happening in my life and happening around me kind of reflects in the content that I write. So the conversations that are happening around me, those are always recharging, and that's what I want my content to show. So ऐसा हुआ ही नहीं that content becomes very tiring for me. But apart from that, if hobbies are required, I really like to speak with people, uh, hear their stories, ठीक है, because these are always fun things for me, like honestly, uh, getting to know their stories and how they felt. Then I really like walking. It really calms my mind and gives me different ideas. Listening to music, these are a few things that I like to engage in. एंड आई लव्ड योर आंसर कि मेरे को कंटेंट ने कभी बोर नहीं किया। दैट्स द पैशन द पर्सन शुड हैव फॉर हिज और हर वर्क, द डेडिकेशन। आई ट्रूली एडमायर दिस। नेक्स्ट है मैम, स्टोरी टेलिंग एंड कम्युनिटी बिल्डिंग। नॉर्मली सोचा जाए तो ये दोनों ही अलग अलग लगते हैं, बट हाउ कैन स्टोरी टेलिंग हेल्प इन कम्युनिटी, कैन हेल्प इन बिल्डिंग अ कम्युनिटी? Okay, so I'll give you a few examples. Say there's a coach, then there's a founder, and there's a brand, right? Uh, a founder has a very different life from normal people around me, right?
If you're going to speak about your business, what you are doing, right, I might not be able to resonate with it. But when you tell me a story of a challenge that you overcame, when you tell me a story when things did not work out for you, that will relate with me. No matter how different our lives are, some of the incidents that are happening to you might resonate with me in a different way. So now, True. when you were totally unrelatable to me, because of a story, I can resonate with you, I can relate to you. And now I feel that, okay, this person is relatable to me, and uh, I identify with this person. ठीक है. Now I start following you and listening to your different stories, and because of those stories, कुछ incidents definitely ऐसे होंगे that are not same in your life, not same in my life, but I would still like hearing about that. I think it often happens between friends as well, right? When you are telling your friend something and it hasn't even happened to them, but they really enjoy listening to it. They really enjoy being in that conversation, because stories are such, and we as humans are such, that we engage in with stories. We enjoy stories. There's a reason why our grandmothers used to tell us stories, because Mm. our brain connects the dots. We like to connect the dots in stories and getting to know what's at the end of it. So that's how stories help you build a community. When people start listening to you, relating to you, no matter how different you are. And as I said, like, we took the example of the founder. Now, if we take an example of a brand, similar thing. A brand, what it does, what audience it serves, what kind of customer it has, what kind of employees it has, all of these things are not really of y- you know concern to a customer. But when a brand has a story, that how it was established, what it stands for, what are its values, what are the things that make this brand truly itself. So these stories help a customer understand the brand to its core and relate with the brand. And that builds your loyal customer base, resulting in a community that you have now built. So that's how stories help you build a community for yourself. No matter you are a founder, you're a brand, a coach, or an influencer, stories apply to all. True, ma'am. But still, there happens to be certain mistakes जो जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं during the storytelling process. So any common mistakes you storytelling में normally you find, and the audience should take care of these mistakes और उनको शुरू से ही avoid किया जाए. Okay, so I think a few mistakes in storytelling can be uh, when you are when you are trying to explain a point more than it is required, like when you are focusing on the wrong parts. ठीक है, like Hmm. if I should be focusing more on the value part, I'm perhaps focusing more on the problem statement. So some things, like एक बार आपने बोल दिया, वो ऑडियंस को समझ आ गया. If you go on speaking about one part of it more and more, so there it becomes unnecessary and even boring. So these are the things that one can edit and like omit this thing. This is something that should be omitted, and this can be Unnecessary done through editing. Right. right, right. जी. एंड व्हाट नेक्स्ट, एक पॉइंट तो ये हो गया कि अननेसेसरी उसको स्ट्रेच ना करें. कोई और Right. पॉइंट? इसके अलावा I think you should just let your true self shine through in your story. You should be authentic in your story. Your audience can often tell uh, when a story is fishy, when it's not coming from a place of authenticity. We often like to share stories where we are great,
where we are put in a limelight. I remember this joke that used to be there on LinkedIn. This became like a signature HR joke that HRs used to put a story that an interview happened and the first candidate came and they were deserving of more income, but they asked for a less number of package, so the HR offered a higher number of package, and this every HR started putting this out. Okay, so now the audience knew that this story is not relevant, that this Not story is not relevant to. true. Yeah, so your story should be authentic to yourself. It should you should shine through your story. It should look to your audience that yes, this story is real. This person, because if a story is not told correctly, if this story is not put in the right words, then instead of gaining the community, you start losing the trust of your community members. दैट्स ट्रू। एंड जैसे आपने अभी जोक की बात की, तो मेरा एक क्वेश्चन इसी पे है कि ह्यूमर एक बहुत ही थिन लाइन में कई बार वर्क करता है। इट कैन बी Right, लुक्ड एट प्रोफेशनल ऑल्सो और अनप्रोफेशनल ऑल्सो। तो क्या right. चीजों का ध्यान रखना चाहिए इफ वी हैव टू यूज ह्यूमर इन अवर स्टोरी, या उसको बिल्कुल अवॉइड किया जाए? I think everybody likes to laugh. Everybody likes when you are a little funny, right? So, but at the same time, humor is very subjective. So, it shouldn't be that you are going overboard with the humor. You should put in some elements of humor and at the right timings. Like it shouldn't be that say this is a story about a personal loss, okay, and there you are putting humor that is perhaps not going to relate to everyone and that might offend few different people. If you're trying to put humor, I think you have to be very, very careful because this is something that can offend a lot of people. And while including humor, uh, there is also a thin line between humor that is for adults and humor that applies to all ages. So usually, I think it's very safe to use humor that is understandable and you're comfortable using that humor to children, to elderly people, and if there are some adult jokes or something, I think that should be avoided because that can leave a wrong impact. Uh, if you might have, yeah, like I think I've seen this in with different pop stars that even though they are not exactly wrong, but this is a criticism that a lot of stars also get that their humor is not suitable for audience that might include children or elderly people, that their audience cannot come to their shows because with their parents because this humor doesn't look respectable when you are with your parents, right? So there you should make sure that that humor is applicable to all so that no age, no though like class is offended by it. ट्रू ट्रू। सो मैं एक बार ऑडियंस को बता दूं, हेयर वी आर ओनली टॉकिंग रिलेटेड टू ब्रांडिंग एंड बिजनेस। बाकी तो कॉमेडी हर तरह की है, आप लोग फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। Right. मैम, अब स्टोरी टेलिंग का ही एक स्टेप आगे हम लोग जाते हैं कि हाउ कैन बिजनेस यूज स्टोरी टेलिंग, उसके क्या बेनिफिट्स एक बिजनेस उठा सकता है? So for storytelling, as our topic for today is storytelling for community growth. So stories really help you foster a community for yourself. Stories help you build loyal customer base. If I have some instances related to say a different brand where I have heard your stories, I relate you with something. You kind of become synonymous to me for that thing. Say Maggie, right? So now Maggie really use storytelling in all of their advertisements and in all of their branding.
it started using those advertisements where kids are living away from home and they're eating Maggie, and how Maggie has become their like midnight partner, right? Hmm. Now, this story relates with so many people. Now, even if you're going to perhaps buy a different set of noodles, you would still say Maggie de do. ठीक है. So, it helps you set a loyal customer base that will always kind of prefer you. Now, if I have to, like, because I remember that story that, I used to eat Maggie in hostel or something. Now, even if someone has grown up and they are adults, now even if they have to cook something at midnight, they would still perhaps want to use Maggie. And also, just not with the just loyal consumer base, but it also helps you with word of mouth promotion. Now that I am your loyal customer, because of the community that you have fostered, you don't have to really spend that much on promotion always. I would be enough to spread that word of mouth. And word of mouth in marketing is like the best sort of promotion that you can get. ट्रू। और एक चीज आई कन्फेस कि मैगी का नाम बहुत आया है, तो आज मैगी मैं खाऊंगा रात को। एंड सेकंड, एक आपने बिल्कुल कहा कि स्टोरी से आगे स्टोरी बनती जाती है। नॉर्मली इफ समबडी विजिट्स इन माउंटेन्स, वहां पे मैगी के साथ उसने एक फोटो डाल दी कि माउंटेन्स विद मैगी या कुछ भी, और आज वो ऐसा ट्रेंड बन गया है कि पहाड़ों में जाना है तो मैगी खानी ही खानी है। हालांकि Right, मैगी से ऊपर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं जो हाफ प्राइस पे भी मिल रही है, बट वो right, कहीं ना कहीं, थैंक यू, कहीं ना कहीं स्टिल मैगी की जो एक ब्रांड अथॉरिटी बनी है स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मेंटेन्ड है। तो मतलब माउंटेन्स के साथ बहुत अच्छे से ब्लेंड किया है, और जैसे आपने मेंशन किया कि मिडनाइट स्नैक की तरह उसको किया है, तो वो चीज है। right. Even though say जी। like it's not even cooked in 2 minutes as they claim, but still people would prefer it. Maybe if you really see that claim of 2 minutes can really go against them. ठीक है. But because of the storytelling they have, uh, it has blended it with people. ट्रू। अभी वो माइंडसेट ऐसा हम लोगों का बन गया है कि जल्दी कुछ खाना है तो मैगी है, क्योंकि वो 2 मिनट्स Right, वाला जो एक पंच लाइन है, वो कहीं ना कहीं थ्रू स्टोरी टेलिंग एंड वो दिमाग में बैठा हुआ है। मैम नॉर्मली क्या right, होता है कि स्टोरीज तो बहुत लंबी लंबी रहती हैं। आप 10 मिनट बोल लो, 1 घंटा बोल लो, कई कई दिन बोल लो, लेकिन जो अब जैसे एड का कॉन्सेप्ट, एडवर्टीजमेंट का कॉन्सेप्ट आपने बताया, उसमें क्या होता है कि वी हार्डली हैव ऑलमोस्ट 10 to 30 सेकेंड्स मेनली, उसमें वो पूरी एक स्टोरी दिखा देते हैं, और वो स्टोरी कहीं ना कहीं रिलेट भी हो जाता है। तो एज अ स्टोरी टेलर, एक लंबी स्टोरी लिखना चैलेंजिंग है या वो 10 या 30 सेकंड की स्टोरी लिखना चैलेंजिंग है? definitely. The shorter one is harder because I've worked on different scripts for these real type of stories with different creators. So there used to be a creator that I worked with, जिनका niche था parenting का, and they would get really good brand deals from brands like there were Flipkart, Amazon, Kinder Joy. We used to have different good brands. तो वहाँ पे these brands would often demand for something storytelling related, ठीक है, where a story is there which also suits the brand voice. So one of the stories that we wrote for Kinder Joy, uh, and it was really hard to stick to those timelines because it's like you only have 30 seconds, but you have to uh, kind of stimulate this emotion, you have to give out this message, you also have to kind of promote this product, ठीक है. So whereas in a long story you can give proper introduction कि सीन का सेटिंग क्या है, ठीक है, what is going inside the mind of the character, what is the screen play, उसके बाद धीरे धीरे you can move forward. But coming to the shorter aspect of storytelling, that is harder uh, to, because that's why we often use different elements. It's not just the story. If you see in the ad formats or in the reel formats, we use music, right, that will relate with the story that
are telling. Like if it's a inspiring story, we would use inspirational music. If it's a emotional story, we would use that sort of music. So there are different elements that come to play when we are writing for shorter story formats. True. म्यूजिक प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। जैसे ही वो म्यूजिक बजता है कहीं ना माइंड अलर्ट हो जाता है कि क्या रिएक्शन देना है। आई थिंक देयर इज सम इंटरनेट प्रॉब्लम। वापस आ गया मैं नेट। हाँ, एक right. वैसे तो मुझे लगता है कि एआई एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और आई रिक्वेस्ट कि आपके पास जब भी नेक्स्ट स्लॉट अवेलेबल हो तो हम उस पर एक डिफरेंट सेशन कर सकते हैं। बट एक छोटा सा क्वेश्चन कि एआई के आने से क्या थ्रेट बढ़ा है या कहीं ना कहीं उसके आने से थोड़ा सा फायदा हुआ है। बाकी उस पर डिटेल्ड डिस्कशन की कैसे उसको यूटिलाइज करके और इफेक्टिव रिजल्ट्स हम निकाल सकते हैं वो एनी टाइम जब भी हम आप अवेलेबल हैं तो वी कैन डू दैट। Okay. So when we talk about I think it's very subjective. Everyone has different opinions. But what I feel for AI is, uh, I have a very neutral stance on AI because at one time it really eases up your research process. Whatever ट्रू। insights I could gather for perhaps a day, now I can have those insights with just like one prompt. Okay. But if I start or if I try to delegate my creative process to the AI, there it fails because it doesn't understand the complexities of human mind, right? Whatever emotions that we have felt for say 30, 40 years and have seen others feel those emotions, AI cannot replicate those emotions. AI cannot make you feel those emotions. So ट्रू। when we try to delegate the creative part, there AI is not successful. But for research and for automation, it definitely works. I honestly use it for a few things, and I think it works well for that aspect. परफेक्ट मैम। टाइम इज रनिंग लाइक एनीथिंग। बहुत जल्दी जल्दी जा रहा था। मैं फटाफट से कुछ एक छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। मैम, Right. सक्सेस फॉर आंचल मैम क्या है और क्या वो कुछ एक ऐसी सक्सेस हैबिट्स हैं आपकी जो आप डेली यूज करते हैं जिसने आपको यहाँ तक पहुंचाया और जिनके भरोसे आपको लगता है आप आगे तक जा पाएंगे। Uh, I think it's sheer luck, honestly, that we kind of get different opportunities. I think the only thing that we have in our hands for moving ahead or for being successful is being really dedicated to your craft and try to always improve upon it. Uh, if you are trying to always find opportunities, trying to better yourself, listen to those who are seniors and always having an open mind and being grounded about your craft. Uh, I think that will definitely lend you different opportunities to move forward in your career path. ओके। एंड सिंस जैसे योर वर्क इज मेनली ऑन लैपटॉप तो जिन जिन का भी लैपटॉप पे या सिस्टम पे काम रहता है उनको वर्क लाइफ बैलेंस का बहुत इशू रहता है क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर टाइम कई बार नहीं होता। घर आके भी काम कर रहे हैं या कहीं भी मतलब वो शुरू हो जाते हैं काम करने के लिए कॉल्स लेने के लिए। तो कुछ ऐसी रूटीन आप फॉलो करते हैं जिससे वर्क लाइफ बैलेंस आपका मेंटेन रहे या वर्क और लाइफ मतलब सॉर्टेड है कोई इसमें मेरे को अलग करने की जरूरत नहीं है ऐसा कॉन्सेप्ट है। Uh, I think I was listening to a podcast the other day. So one of my favorite writers was in that on that podcast, and she said a beautiful thing that it's not about work-life balance. It is more about work-life harmony. That your work and your life are in harmony with each other. And for me, it is mostly like that. So there have been times when I have to give something to my client, and I am running late or something, and I am writing it on the metro. I am writing it while traveling. I'm getting my hair cut, and then I'm thinking about the ideas that I can
use for my client. So it is, for me, it is kind of like this, that my work doesn't really bother me that much. It's not like, okay, I get really burnt out. Well, currently it's not like that. Uh, so that's why for me it is like this only. Ki whatever work that I have to deliver, it is spread out all over my day, and I enjoy doing it. So I am not using any techniques or tips. I don't have any tips for work-life balance because I really enjoy my work. So I honestly haven't had such a moment फिलहाल तक. मैम योर एक्सपीरियंस जितना भी आपका है वो कहीं ना इट्स रिफ्लेक्टिंग इन योर आंसर्स, सो आई ट्रूली अप्रिशिएट दैट, क्योंकि बहुत ही जिसको कहते हैं कि समझ के साथ आंसर्स आप दे रहे हैं, और बहुत ही जिसको वी कैन से पॉलिटिकली करेक्ट आंसर्स, कि कोई भी एक स्टैंड आप नहीं ले रहे हो, जो बिल्कुल ऑडियंस के हिसाब से दोनों चीजों को आप एक्सप्लेन करके कर रहे हो, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग आई वुड से। बातें तो देखो बहुत सारी हैं और बहुत मन भी कर रहा है बातें करने का, बट हमारा 30 मिनट्स का स्लॉट है, इतना ही टाइम मैंने आपसे लिया था। जाते जाते एनी वन एडवाइस विच यू वांट टू गिव टू द ऑडियंस, जो आपको लगता है कि हाँ हम सबके लिए फायदेमंद रहेगी। I think the only advice would be to be really passionate about what you do, and be always open to learning and open to feedback. I think this is something that really helps someone, because often it happens that once you do a few projects and money starts coming in, and you start feeling okay, I think I've made it. But if you have an open mind, if you're always open to feedback, there is there are always different opportunities to learn from, and you would never know what opportunity you can grab, and what next comes. So being really open to all of those opportunities, to any feedback that comes your way, and being dedicated to your craft, and aiming to always improve upon what you are doing, that really helps. थैंक्स अ लॉट मैम फॉर योर टाइम। और इट्स वेरी स्ट्रेंज, टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच चुकी है कि शायद 3 days प्रायर तक हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, एंड Right. समहाउ वी गॉट कनेक्टेड, एंड बहुत ही पॉजिटिव साइंस आपने दिए कि हाँ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस लाइव सेशन। ऑल थैंक्स टू यू, क्योंकि टाइम इज अ वेरी प्रीशियस कमोडिटी दीज डेज, और आपने वो टाइम दिया उसके लिए रियली रियली थैंकफुल। एंड होपफुली एक सेशन और जब भी हमारा वो एआई वाला होता है तो विल डू। थैंक यू मैम, Thank you थैंक्स अ for लॉट। Yeah, thank you for जी, inviting me. I'm very happy that we could have this session. I'm really thankful to you for inviting me here. थैंक यू मैम, टेक केयर, बाय बाय, एंड थैंक्स टू Yeah, ऑल द ऑडियंस जितने भी हैं, थैंक्स फॉर द सपोर्ट, थैंक यू। ओके बाय, टेक केयर। thank